हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टक इन बिटवीन 45 टू 55 मार्क्स। 45 to 55 marks. Sometimes you are getting 47. Sometimes in some test you are getting 56. Sometimes in some test you are getting 50. And then in again another test you are getting 45 again. So you are stuck in the cycle of 45 to 55 tests, and you have given more than 7 tests so far. Okay, you have given more than 7 tests so far, and you are seeing this trend that in some of the tests you are getting above 50, in some of the tests you are getting below 50. So you are stuck in the cycle of 45 to 55 marks. So this is a very, very important video, because all of you are surely to be in the top 500 of the GATE 2024, but I want you to be in GATE 2024 top 100 rankers. So how to jump from that top 500 to top 100? So this is जो भी मैं अभी बोलने वाला हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन एंड मैसेज टू ऑल ऑफ यू. ध्यान से सुनना एंड उसके बाद आने वाले जितने दिन हैं उसमें इंप्लीमेंट करना. सो गाइज, गिविंग ए टेस्ट is not a simple practice. Giving a test is not only a 3-hour challenge. The preparation of the test starts much before than giving the test in the mind that I have to give the test at this much of time and so on. And after that, after finishing the test, analysis of the test also takes time. So giving a test is nearly a 5 hours process. Okay. And in those 5 hours, it's a very continuous process, because there is not even a single minute to rest, because you are first attempting the test and then you are analyzing the test, and there are some pre-preparations of the test also. So guys, analysis of the test is very, very important. Very, very important. And I know all of you are doing the analysis very seriously. I'm getting messages of the students that, sir, in the analysis, almost 2 hours get spent. 1.5 hours get spent. So I know that you are doing the analysis religiously. But my important message to all of you, that what after doing the analysis? You are doing the analysis, that is fine. But what after the analysis? It's just like that I have prepared some report regarding some discrepancies in the department of some government, and then I submit that report to the main authority, and then authority is not doing anything based on that report, is not taking any action. You are just behaving like that authority. You are giving the test, then you are analyzing the test, then you are sending the analysis to me. That is okay, that is fine, very good. But what about analysis after the analysis is done? You are not implementing the analysis. That is the main challenge. Because after giving the test and the analysis, you need to watch a lecture for the rank improvement series also. I know that takes time. Some of you may be attending the crash course of chemical technology also. I know that is taking time. And some of you may be revising the subject every day, along with the PYQs, along with the short notes. So that's also takes some time. So basically, you are not getting the time to work on that analysis. And if you are doing it, you are not doing it efficiently, properly, adequately. So guys, if you want to achieve a much better score in the test series as well as in the GATE exam, the main idea is to work upon your analysis. आपको आगे आप ही का एनालिसिस लेके जाएगा, कोई और नहीं लेके जा सकता. So करना क्या है? What you need to do is to reduce the frequency of test. I don't know what is your frequency. I hope that it's 1 test per day. Now what you can do is reduce it. Reduce it to 1 test per 2 day. Means instead of giving daily test, you can give the test on the alternate basis.
And if your frequency is already on the alternate basis, then reduce it to one test per 3 days so that you can get time. Because as I already mentioned, that giving a test is a 5 hour long process. Now, what happens when you don't give the test is you save those 5 hours. And those 5 hours straight away you should dedicate for implementing the analysis. Now, what does analysis involve? The analysis involve that the name of the topics or the name of the concepts from which the questions have come, but you are not able to attempt it. I'm talking about the number of unattempted questions. So there are many questions that remain unattempted. If you are getting 45 to 55 marks, then it simply means that almost 15 questions or maybe 20 questions remains unattempted. So those 15 to 20 questions, why they are unattempted? Simply because you are not being able to apply the concept into the question, or maybe that concept is not clear, or maybe that concept is not studied by you. So write down the name of the concept, the name of the topic, and what you will do in those 5 hours the next day, you will study that concept from the notes. You will study the concept from the book, or if it is required, you can study that concept from the lecture also. After that, when the concept is clear to you, what you can do is to solve the PYQs related to that concepts. May it be 3 question, 5 question, 10 question, solve all the questions of the PYQs related to that particular concept. And then what is the third step? The third step is to solve the same question that remained unattempted the previous day or maybe in previous test. So when you solve that question now, then mostly the chances are that you will be able to solve it. And if still you are not able to solve it, then look at the solution and then see where you are lagging behind in applying that concept. Maybe there is some extra thing or extra formula or something else that is written in the question, written in the solution that you are missing. That is why you are not being able to solve. So in this way, whatever the unattempted question, okay, learn the concept of that question and solve it. The exception is that, for example, if you left any subject, for example, if you left PC, if you left some of the part of thermo, if you left some of the part of the FM or any other subject, then don't go through the topics or the concepts of those subjects. The main idea is that if you have completed one subject for the GATE exam, and from that subject, if some question get unattempted, then you have to go through the topic or the chapter of that particular question from that particular subject. So अगर आपने एक सब्जेक्ट गेट के लिए कर लिया है, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाता है, तो वो क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना है, उसके रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है. बट अगर कोई सब्जेक्ट आप गेट के लिए छोड़ के ही जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने की नीड आपको नहीं है, उससे रिलेटेड चीजें आपको करने की नीड नहीं है. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द एनालिसिस पार्ट 1. इसके बाद एनालिसिस में और आपने क्या एनालिसिस किया? इसके बाद आपने एनालिसिस किया दैट वट एवर द क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, फ्रॉम दोस क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट and how many questions are incorrect. Means the questions in which you scored the negative marking. Look at the reasons behind the negative marking. If the reason is some complex mathematics like the differentiation, integration, taking the Laplace, doing other things in the mathematics involved like the applying the numerical method or something else, so work on that. Work on your mathematical skill, so that the next time when the same type of calculation comes, you will be able to solve. And if the error is like प्लस की जगह माइनस कर दिया, 2 का 3 लिख दिया, आंसर जूल में पूछा था आपने किलो जूल कर दिया, फ्रैक्शन में पूछा था परसेंटेज कर दिया, then obviously the problem is the focus. You are not giving the exam with that much of focus. So in that way, what you can do is whenever you give the test, your room should be closed. Whenever you give the test, your phone should not be around. Your phone should be in some other room or maybe switched off. Okay. Those 3 hours must be alone,
कोई साथ में और नहीं होना चाहिए, आप अकेले टेस्ट दो, एंड दोस 3 आवर शुड बिलोंग्स टू यू ओनली. रीड द क्वेश्चन ट्वाइस इनिशियली, एंड आफ्टर द सॉल्यूशन व्हेन द आंसर केम, देन रीड द क्वेश्चन अगेन, स्पेशली कि जो भी यूनिट्स क्वेश्चन में दी थी आपने वही रखी है क्या, और जिस यूनिट में आंसर पूछा है आपने उसी यूनिट में निकाला है क्या. So if you do this practice for every question, then obviously your answer will be right. So इस तरह से जब आप एनालिसिस को इंप्लीमेंट करोगे तो अगला टेस्ट जो भी आप देने वाले हो उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी. What I told that whatever the subjects आपने जो कंप्लीट किया है गेट के लिए, from that subject if there is any question which remain unattempted, then go through that topic, go through that concept, go through the PYQs of that concept and then solve that question again, so that वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अगली बार जब आए तो आप कर पाओ. The idea is in the GATE 2024 हम जो भी सब्जेक्ट करके जा रहे हैं ना उसके सारे क्वेश्चंस हम कर पाए. In GATE 2024 whatever the subjects that we have completed, we should be able to do all the questions from that subject. If some of the subject is left, it's okay. But if one of the subject or some of the subject is completed, then from those completed subject, every question should be attempted in the right manner so that you can get the marks as well as get the rank. So I hope you understood what I am saying, that कि एनालिसिस तो कर लेते हैं बट एनालिसिस के बाद एनालिसिस का कुछ करते नहीं है. तो एनालिसिस के बाद एनालिसिस का कुछ करो, टाइम नहीं है तो टाइम निकालो. And if you want to reduce the frequency, you can reduce the frequency by 1 day so that you can get the time, and in that time you can implement the analysis, guys. So that is very, very important. And when you do this, obviously your marks in the test series will improve. Hello guys, to improve your rank, अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट गाइडेंस की, क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई नो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद अनअकैडमी प्लस पर मुझसे नहीं पढ़ा है. एंड गाइस, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस मुझसे पढ़ने में, बाकी फैकल्टी से पढ़ने में. देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस. और ये आप उन बच्चों से पूछ सकते हो जो अनअकैडमी प्लस पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, या उन्होंने जो नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है कि जब आप एक क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ते हो. तो एक्सपीरियंस मैटर्स, एंड आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द गेट केमिकल इंजीनियरिंग. सो गाइज, वो गैप ब्रिज करने के लिए और लास्ट के 20 दिनों में गेम चेंज करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर आप लोगों के लिए आया है, जिसमें आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग वैसे तो 7,000 है, बट इस नए साल के उपलक्ष्य में गेट प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए इस ईयर 2024 में आपके लिए वो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2024 रुपीज के अंदर मिलेगा. गाइस, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत होने देना, बिकॉज ये लास्ट का 1 मंथ बहुत क्रूशल है. अगर इस लास्ट के 1 मंथ में 2 या 3 सब्जेक्ट भी आप चिप इन कर लेते हो ना, तो वो आपके लिए एक बोनस मार्क्स साबित होंगे. और अगर आप अपना सिलेबस कर भी चुके हो तो भी जो गाइस मेरी रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज है मैथमेटिक्स की, हीट ट्रांसफर की और मास ट्रांसफर की, वो एक गेम चेंजर होने वाली है. बिकॉज जो कंटेंट मैंने वहां दिया है गाइस, वो कंटेंट बिल्कुल ही अलग प्लैनेट का कंटेंट है. जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा डीप डाइव इन करने का मौका मिलेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर. तो गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अपने हाथ से मत जाने देना. 2000 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता, बट ये 2000 अमाउंट से अगर 2 नंबर भी आपके इंक्रीज करे तो गाइस ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो सकता है. और इतनी तो मैं गारंटी देता हूं कि 2 नंबर तो नहीं, ज्यादा ही मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे अगर आप 20 दिनों में ढंग से पढ़ते हो तो. ठीक है, आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन लेट मी नो. एक बार मैं आपसे बात करूंगा और देखूंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो और क्या ऐसे कोर्स है जो आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने रैंक को गेट 2024 में इंप्रूव कर सको. सो लेट मी नो
after taking the subscription. And guys, remember, take the subscription by using the code Ankur073. Ankur073 मेरा फैकल्टी कोड है, Ankur073 गाइडेंस कोड है, Ankur073 इज ए गेटवे टू द एक्सपर्ट गाइडेंस. तो Ankur073 कोड अप्लाई करने के बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, जिससे कि गेट एग्जाम जो कि 4 फेब को होने वाला है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको. सो गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ. ठीक है, द प्राइस इज 2024 ओनली, बट इट इज लिमिटेड टू ओनली 13th January. सो 13th January इज द कट ऑफ डेट जहां तक ये प्राइस आपको मिलेगा. उसके बाद ये 1 मंथ का प्राइस दोबारा से उतना ही हो जाएगा जितना है. तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, लेट बेनिफिट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर दिन भी नहीं बचेंगे. तो अभी आप इसको लेकर अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करो, मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो. सो ऑल द बेस्ट गाइस. I will see you in the classes very soon. Let's crack it.